Hello everyone. In previous class we discussed about wave shaping circuit and we also discussed switching characteristics of the diode. In this lecture we will study about transistor as a switch, its operating reasons. After this we will move on the basic NPN transistor switching circuits. इसके बारे में हम देखेंगे कि जो स्विचिंग सर्किट हैं वो क्या होते हैं और NPN ट्रांजिस्टर के थ्रू हम स्विचिंग सर्किट कैसे डिजाइन कर सकते हैं. After this we will see some example. कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे स्विचिंग सर्किट्स के. Next is a digital logic transistor switch. After this we will move on PNP transistor switch. पहले हमने NPN ट्रांजिस्टर को देखा कि स्विच की तरह कैसे हम यूज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर मतलब दो टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं PNP और NPN, दोनों को हम देखेंगे एज अ स्विच कैसे सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं. Next one is a Darlington transistor configuration, and finally the reference of this presentation. So in this lecture we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1, transistor as a switch. ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं. पिछले वाली यूनिट में हमने देखा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. इस यूनिट में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे यूज कर सकते हैं. So transistor switches can be used to switch a low voltage DC device. Example, LED means light emitting diodes, on or off by using a transistor in its saturated or cut off state. तो हमने प्रीवियस वाली क्लास में ट्रांजिस्टर के रीजंस के बारे में भी कुछ स्टडी किया था कि एक सैचुरेशन रीजन होता है, एक कट ऑफ रीजन होता है और एक एक्टिव रीजन भी होता है. तो नॉर्मली हम ट्रांजिस्टर का यूज एज अ स्विच लो वोल्टेज डीसी डिवाइसेस को ऑन और ऑफ करने में करेंगे. When used an AC signal amplifier, the transistor base biasing voltage is applied in such a way that it always operates within its active region. That is, the linear part of the output characteristics curve are used. However, both the NPN and PNP transistor can be made to operate as on or off type solid state switching device by biasing the transistor base terminal differently to that for a signal amplifier. Solid state switches are one of the main applications for the use of the transistor to switch a DC output on or off. Some output devices such as light emitting diode, in short LEDs, only require a few milliamperes at a logic level DC voltage and can therefore be driven directly by the output of the logic gates. However, high power devices such as motor, solenoids or lamps often require more power than the supplied by an ordinary logic gates. So, transistor switches are used. तो नॉर्मली जो LED होती है उसको तो हम डायरेक्ट लॉजिक गेट से कनेक्ट करके ही ऑन और ऑफ कर सकते हैं, बट जो हाई पावर डिवाइसेस होती हैं जैसे कि मोटर हो गया, सोलेनोइड डिवाइसेस हो गए और लैंप हो गए, इनको स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं.
If the circuit uses the bipolar transistor, means BJT, as a switch, then the biasing of the transistor, either NPN or PNP, is arranged to operate the transistor at both sides of the IB characteristics curve we have seen previously. The area of operation for a transistor switch are known as the saturation region and the cutoff region. This means then that we can ignore the operating Q point biasing and the voltage divider circuitry required for amplification, and use the transistor as a switch by driving its back and forth between its fully off means cutoff and fully on means saturation region as shown in figure. तो इसमें हम एक्टिव रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम केवल दो रीजन की बात करेंगे, क्योंकि हमें स्विच को या तो ऑन करना होता है या तो ऑफ करना होता है ना। तो इसलिए हम कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग रीजंस ऑफ द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। दिस इज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर की जो हमारी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो शेडेड लाइन वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर फॉर फुल्ली ऑन कंडीशन। और ये जो डैश करके आप रीजन देख पा रहे हैं यहाँ वाला नीचे, जो कि रेड थोड़ी सी रेडिश टाइप की लाइन से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन और ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑफ। तो सैचुरेशन रीजन में जो है वो हमारा स्विच एक्ट करेगा एज अ ऑन स्विच की तरह, और कट ऑफ रीजन में जो है स्विच एक्ट करेगा एज अ ऑफ की तरह। Type of operating region. So there are two main operating regions. They are cutoff region and saturation region. The pink shaded area at the bottom of the curve represent the cutoff region. ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो बॉटम वाला एरिया है जो कि शेडेड किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड दी कट ऑफ रीजन। कट ऑफ मींस इन दिस कंडीशन जो स्विच हमारा एक्ट करेगा ऑफ स्टेट की तरह एक्ट करेगा। While the blue area of the left represent the saturation region of the transistor. Both these transistor regions are defined as number 1 cutoff region. Here the operating condition of the transistor are zero input or zero input base current IB, zero output collector current IC, and the maximum collector voltage VCE, which result in a large depletion layers and no current flowing through the device. Therefore, the transistor is switched off or fully off. Cut-off characteristics. So this is the circuit diagram for cut-off characteristics. ये हमारा नॉर्मली कट ऑफ रीजन में जब ट्रांजिस्टर वर्क करेगा उसके लिए सर्किट डायग्राम है, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आरएल हमारे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, तो आरएल का आरएल ही रहेगा। ये वी आउट, तो हमारे पास वी आउट इज कॉल्ड द आउटपुट वोल्टेज। और ये जो पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर सर्किट है, ये एज अ स्विच की तरह एक्ट करेगा, जो कि ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज द इनपुट एंड द बेस आर ग्राउंडेड 0 वोल्ट. Base emitter voltage VBE is less than 0.7 volt. Base emitter junction is reverse biased. Base collector junction is reverse biased. Transistor is fully off in a cutoff region. No collector current flow means the value of IC is equal to 0, and the output voltage Vout is equal to VCE is equal to VCC is equal to 1. Then the transistor operate as an open switch. Then we can define the cutoff region or off mode when using a bipolar transistor as a switch as being both the junction reverse biased. VB
less than 0.7 volt and the collector current IC is equal to 0. For PNP transistor, the emitter potential must be negative with respect to the base. तो इसमें जो हमारे दोनों जंक्शन है वो रिवर्स इसमें काम करते हैं, इसलिए जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑफ की तरह एक्ट करता है और ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है. Number 2 is saturation region. Here the transistor will be biased so that the maximum amount of base current is applied, resulting in maximum collector current, resulting in the minimum collector emitter voltage drop, which result in the depletion layer being as small as possible and maximum current flowing through the transistor. Therefore, the transistor is switched on or fully on in a saturation region. तो ये दो रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला कट ऑफ रीजन हो गया जिसमें ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह काम करता है और ओपन सर्किट की तरह काम करता है. सैचुरेशन रीजन में जो है वो स्विच क्लोज की तरह काम करता है. So next is the saturation characteristics. This is the circuit diagram for saturation characteristics and this is the equivalent. इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम ये है. इसमें जो स्विच है वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और शॉर्ट सर्किट की तरह दिखेगा. दिस इज कॉल्ड द क्लोज स्विच. तो ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह दिखेगा. इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं. द इनपुट एंड बेस आर कनेक्टेड टू VCC. Number next, base emitter voltage VBE is greater than 0.7 volt. Base emitter junction is forward biased. Base collector junction is forward biased. Transistor is fully on in a saturation region and maximum collector current flow. That means IC is equal to VCC divided by RL. The VCE is equal to 0 in ideal saturation condition and the output voltage Vout is equal to VCE is equal to 0. So transistor operates as a closed switch. तो इसमें हमारे पास चूंकि हमारा ट्रांजिस्टर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसमें हमारे पास दो जंक्शन होते हैं तो इसमें दोनों के दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस में एक्ट करेंगे. तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्विच की तरह काम करेगा या शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा. तो ये तो हो गया हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशंस. मींस कट ऑफ रीजन में वो स्विच ऑफ की तरह एक्ट करेगा और सैचुरेशन रीजन में स्विच ऑन की तरह एक्ट करेगा. Then we can define the saturation region or on mode when using a bipolar transistor as a switch as being both the junction forward biased and VB means base voltage is greater than to 0.7 volt and collector current IC is equal to maximum value. For a PNP transistor, the emitter potential must be positive with respect to the base. Then the transistor operate as a single pole, single throw SPST solid state switch. तो एक ये स्विच का टाइप है जिसको हम SPST बोलते हैं. एक हमारा TPST भी होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो. तो ये हमारा एक स्विच की तरह काम करता है. With a zero signal applied to the base of the transistor is turned off, acting like an open switch and zero collector current flows. With a positive signal applied to the base of the transistor, it turns on, acting like a closed switch and maximum circuit current flow through the device. The simplest way to switch moderate to high amount of the power is to use the transistor with an open collector output and the transistor emitter terminal connected directly to ground. When used in this way, the transistor open collector output can thus sink an externally supplied voltage to ground, thereby controlling any connected load.
An example of NPN transistor as a switch being used to operate a relay is given below, which indicate loads such as relays or solenoids. A flywheel diode is placed across the load to dissipate the back EMF generated by the inductive load when the transistor switched off and to protect the transistor from damage. If the load is of a very high current or voltage nature such as motor, heater, etc., then the load current can be controlled by a suitable relay as shown in a figure. The next topic is a basic NPN transistor switching circuit. The circuit resembles that of a common emitter circuit we looked at in the previous tutorials. The difference this time is that to operate the transistor as a switch, the transistor needed to be turned either fully off or fully on. An ideal transistor switch would have infinite circuit resistance between the collector and emitter when they turn fully off, resulting in zero current flowing through it, and zero resistance between the collector and emitter when turned fully on, resulting in maximum current flow. So this is the circuit diagram for NPN transistor as a switching circuit. In practice, when the transistor is turned off, the small leakage current flow through the transistor, and when fully on, the device has a low resistance value causing a small saturation voltage VCE across it. Even though the transistor is not a perfect switch, in both the cutoff and saturation region, the power dissipated by the transistor is at its minimum. In order for the base current to flow, the base input terminal must be made more positive than the emitter by increasing its above the 0.7 volt needed for a silicon device. इसको हम कैट इन वोल्टेज भी बोलते हैं. सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है. By varying this base emitter voltage VBE, the base current is also altered, and which is in turn controls the amount of the collector current flowing through the transistor as previously discussed. When maximum collector current flow, the transistor is said to be saturated. The value of the base resistor determines how much input voltage is required, and corresponding the base current to switch the transistor is fully on. So the next topic is some example transistor as a switch. Example 1. Using the transistor value of beta is equal to 200, collector current IC is equal to 4 milliampere, base current IB is equal to 20 microampere, find the value of the base resistor RB required to switch the load fully on when the input terminal voltage exceeds 2.5 volts. So the value of RB is equal to VL minus of VBE divided by IB. Put the values. So 2.5 volts minus of 0.7 volt divided by 20 into 10 raised to the power minus 6. So we get 90 kilo ohm. The next lowest preferred value is 82 kilo ohms. This guarantees the transistor switch is always saturated. Example 2. Again, using the same value, find the minimum base current required to turn the transistor fully on for a load that requires 200 milliampere of current when the input voltage is increased to 5 volt
Also calculate the new value of RB, means base resistance. So transistor base resistance, or firstly we calculate the transistor base current. IB is equal to IC divided by beta. Put the value. So the value of IC 200 milliampere divided by beta 200. So we get 1 milliampere. It's called the value of base current. Now calculate the transistor base resistance. So RB is equal to, formula होता है VN minus of VBE divided by IB. Put the value, so we get the value 4.3 kilo ohm. So this is called the base resistance. The next topic is digital logic transistor switches. So this is the circuit diagram for digital logic transistor switch. इसमें लॉजिक गेट का यूज किया हुआ है हमने, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑलरेडी हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड NPN ट्रांजिस्टर. एरो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, PNP है या NPN है. एरो ऑलवेज इंडिकेट करता है डायरेक्शन जो है P से N की ओर. तो अगर ये जो डायरेक्शन होता है हमेशा एरो का वो P से N की ओर होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा P हो जाएगा और ये वाला N हो जाएगा. और जो पॉइंट यहाँ पे होता है सेम पॉइंट यहाँ पे होता है, तो हमारा NPN ट्रांजिस्टर ये है. हम अगर नहीं भी लिखा है तो हम एरो का डायरेक्शन देख के बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर है. अब इसमें एक लाइट एमिटिंग डायोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू गेट के. ठीक है, और ये डिफरेंट लोड्स हमने दिखाए हुए हैं, डिफरेंट कलेक्टर लोड्स. फर्स्ट इज मोटर, सेकंड इज LED एंड थर्ड इज कॉल्ड द हीटर. The base resistor RB is required to limit the output current from the logic gates. The next topic is PNP ट्रांजिस्टर स्विच. अभी हमने देखा NPN ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, काफी सारे हमने उसके यूजेस देखे, एग्जांपल भी हमने समझा कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ बेस रेजिस्टेंस एंड बेस करंट की. We can also use the PNP transistor as a switch. The difference this time is that the load is connected to ground or 0 volt, and the PNP transistor switches the power to it. To turn the PNP transistor operating as a switch on, the base terminal is connected to ground or 0 volt as shown in a figure. So this is the diagram. PNP transistor switching circuit. The equation for calculating the base resistance, collector current and voltage are
exactly the same as for the previous NPN transistor switch. The difference this time is that we are switching power with a PNP transistor instead of switching ground with the NPN transistor. So the next topic is Darlington transistor switches. Sometimes the DC current gain of the bipolar transistor is too low to directly switch the load current or voltage, so multiple switching transistors are used. Here, one small input transistor is used to switch on or off a much larger current handling output transistor. To maximize the signal gain, the two transistors are connected in complementary gain compounding configuration, or what is more commonly called a Darlington configuration. डार्लिंगटन था जिसने इस कॉन्फ़िगरेशन को डिज़ाइन किया था, इसलिए इसको हम डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो हम एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ कंपाउंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं. What is more commonly called as Darlington configuration, and where the amplification factor is the product of two individual transistors. Darlington transistors simply contain two individual bipolar NPN or PNP type transistors connected together so that the current gain of the first transistor is multiplied with that of the current gain of the second transistor to produce a device which acts like a single transistor with a very high current gain for a much smaller base current. ऐसा करने से क्या होता है, हमें करंट गेन जो है वो हायर करंट गेन मिल जाता है और बेस करंट जो होती है वो उसमें बहुत कम मिलती है. The overall current gain beta or HFE value of Darlington device is the product of the two individual gain of the transistor and is given as beta overall current gain beta total is equal to beta 1 into beta 2. beta 1 किसके लिए है, फॉर ट्रांजिस्टर 1 के लिए, और beta 2 किसके लिए है, फॉर ट्रांजिस्टर 2 के लिए. So Darlington transistors with very high beta value and high collector current are possible compared to a single transistor switch. For example, if the first input transistor has a current gain of 100 and the second switching transistor has a current gain of 50, then the total current gain will be 100 multiplied 50. We get 5000. So, for example, if our load current from above is 200 milliampere, then the Darlington base current is only 200 milliampere divided by 5000. So we get 40 microampere. A hug reduction from the previous 1 milliampere for a single transistor. तो इससे फायदा है बेस करंट हमारा बहुत कम हो जाता है और हमें हाई करंट गेन मिलता है in case of Darlington transistor switch के through. An example of the two basic type of Darlington transistor configurations are shown in a figure. Next slide में हम देखेंगे. The NPN Darlington transistor switches configuration show the collectors of two transistors connected together with the emitter of the first transistor connected to the base terminal of the second transistor. Therefore, the emitter current of the first transistor becomes the base current of the second transistor, switching it on.
So this is the diagram for Darlington transistor. First for NPN Darlington output and second is a complementary output. इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि हमने दो ट्रांजिस्टर को यूज किया हुआ है। पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो अमीटर टर्मिनल है उसको हमने दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल या बेस से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट। The first or input transistor receives the input signal to its base. The transistor amplifies it in the usual way and use it to drive the second large output transistor. The second transistor amplifies the signal, again resulting in a very high current gain. One of the main characteristics of Darlington transistor is their high current gain compared to single bipolar transistor. तो इस अरेंजमेंट के थ्रू हमें यहाँ पे हाई करंट गेन मिलता है, as well as its high increased current and voltage switching capabilities. Another advantage of the Darlington transistor switch is in its high switching speed, making them ideal for use in inverter circuits, lightning circuits and DC motor or stepper motor control applications. One difference to consider when using a Darlington transistor over the conventional single bipolar type when using a transistor as a switch is that the base emitter input voltage VBE need to be higher at approx 1.4 volt for silicon device due to the series connection of two PN junction. अब इसमें क्या होगा, नॉर्मली हमारा 0.7 वोल्ट जो है वो कट इन वोल्टेज होता था सिलिकॉन का, बट चूंकि हमने दो ट्रांजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो हमारा वोल्टेज दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.7 प्लस 0.7 सो 1.4 वोल्ट। तो अब हमारा डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर जो है उसका कट इन वोल्टेज 1.4 वोल्ट हो जाएगा। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर स्विच। Now the next is a summary of transistor as a switch. Then to summarize, when using a transistor as a switch, the following conditions apply. Number 1, transistor switches can be used to switch and control lamps, relay or even motors. Number 2, when using the bipolar transistor as a switch, they must be either fully off or fully on. क्योंकि अगर हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज कर रहे हैं तो उसमें स्विच की दो ही कंडीशन होती हैं, या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, बीच का कोई कंडीशन नहीं होता। ट्रांजिस्टर दैट आर फुल्ली ऑन आर सेड टू बी इन देयर सैचुरेशन रीजन। तो ऑन कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर दैट आर फुल्ली ऑफ आर सेड टू बी इन देयर कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट, when using the transistor as a switch, a small base current control a much larger collector load current. Next, when using transistor to switch inductive load such as relay and solenoid, a flywheel diode is used. Next, when a large current or voltage need to be controlled, Darlington transistor can be used. जब हमें कहीं भी अगर वोल्टेज गेन एज वेल एज करंट गेन अगर हमें ज़्यादा चाहिए है तो हमें डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर का यूज वहां पे करना होगा। नेक्स्ट इज द रेफरेंसेस। So these are the references of this presentation. And thank you for watching this video.